So today we are going to see pharmacodynamics, receptors, mechanism of receptor action, then and receptor and related points, important points for your GPAT and other exams, right? So first of all, we have seen the two definitions. Pharmacokinetics means ADME, absorption, distribution, metabolism, and elimination of drug. So out of that also elimination, metabolism, and elimination. Okay, distribution, metabolism, elimination. ADME जो process है उसमें का distribution, metabolism and excretion, that is known as a drug deposition process. We have seen in the very first when I was discussing about the general pharmacology. So absorption, distribution, metabolism, elimination is a, known as a kinetics of drug. That is a movement of drug within the body. That is a kinetics, right? Now it is also known as what body does with drug. Body drug के साथ में क्या करती है drug के साथ में body उसको absorb कर रही है, उसको distribute कर रही है, उसको metabolize कर रही है, उसको eliminate कर रही है. So what body does with drug is a kinetics. Now what do you mean by pharmacodynamics? So pharmacodynamics means it is a quantitative study of drug and its pharmacological response. So study of drug and its pharmacological response upon the body, that is known as dynamics. In the other words, you can say what drug does with the body is a dynamics, right? Now how drugs act, how drug alter the physiological status of your body, how drug exert a beneficial effect, that is nothing but the mechanism of drug action, right? So drug may act through a various mechanism. ड्रग बहुत सारे मैकेनिज्म से एक्ट होता है. पहला मैकेनिज्म क्या हो सकता है आपका? स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन मींस व्हाट? इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एनीथिंग. स्टिमुलेशन मतलब क्या? स्टिमुलेशन मींस व्हाट? सो इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम, इट इज नोन एज स्टिमुलेशन. फॉर एग्जांपल कार्डियक स्टिमुलेशन मींस व्हाट? टू इंक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट. तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई ड्रग, कोई केमिकल या फिर कोई भी मतलब कोई भी चीज आपकर आपके हार्ट के फंक्शन को इंक्रीज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक स्टिमुलेंट. अगर वही चीज आपके नर्वस मतलब ब्रेन का फंक्शन इंक्रीज करती है उसको क्या बोलेंगे? नर्वस स्टिमुलस, स्टिमुलेशन. सो स्टिमुलेशन इज नथिंग बट द इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर टिश्यू or particular cells. So stimulation, a drug may act as a stimulant, drug may act as a stimulation, or drug may act by stimulating the particular system. For example, adrenaline is there, adrenaline is there which stimulate your heart muscle. So adrenaline क्या करता है कि आपका मायोकार्डियम जो है वो उसको stimulate करता है. So drug may act by different mechanism. First mechanism is the stimulation. Stimulation means increase in the activity of particular cells, tissue or system. Stimulation. So example is adrenaline that stimulate your heart, right? So now second mechanism of action is nothing but the depression. So what do you mean by depression? अगर stimulation क्या है? Stimulation is nothing but the increase the activity of particular tissue, cells or system. So what do you mean by depression? So obviously depression means decrease the activity of particular system or decrease the activity of particular cells or particular tissue or particular system. So that is known as a depression. So drug may act as a stimulant or drug may act as a depressant, or drug may act by stimulating the particular system or drug may act by depressing the particular system. So stimulation means increase in the activity, depression means decrease in the activity. For example, this quinidine is the antiarrhythmic drug which depresses your heart. Then morphine is also a CNS depressant. Okay, so morphine depresses the CNS. So drug may act by stimulating a particular system or by depressing the particular system. Again, a drug may act by causing irritation to your system or causing irritation to your tissues. So irritation. So drug may cause inflammation, corrosion and necrosis. तो वहाँ पे आपको inflammation कर सकता है drug, corrosion कर सकता है, necrosis करता है. ये necrosis means loss of tissue, corrosion means irritation, okay, inflammation means वहाँ पे सूजन आना वगैरह. So a drug may act as a stimulant, depressant or drug may act via irritation action. Drug may stimulate your particular system, drug may depress your particular system or drug may irritate your system, right? So for example, which kind of drug they act by irritation? So example is nothing but the counter irritant drug. Counter irritant drug, for example turpentine oil, that is a counter irritant which are used in the treatment of arthritis. So counter irritant drug they act by irritation action, right? Now next one is a replacement. Suppose that you are suffering from any deficiency. अगर आपको कोई deficiency है, suppose you are having vitamin B12 deficiency or vitamin C deficiency, you know that deficiency of vitamin C causes one disease known as scurvy. Vitamin D deficiency causes the osteomalacia in the adults and rickets in the children.
तो अगर विटामिन डी का डिफिशियंसी हो गया तो बच्चों में रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाएगा, या फिर अगर अडल्ट में हो गया विटामिन डी का डिफिशियंसी तो उसमें क्या है ओस्टियोमलेसिया नाम का डिसीज है। तो अगर डिफिशियंसी है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू रिप्लेस दैट। So drug may act as a replacement therapy. So suppose you are suffering from any kind of deficiency of any vital amines like vitamins or any metabolite or anything that is deficient in your body. For example, if you are suffering from hypovolemia, so blood volume is less. So in that case, you have to increase the blood volume. So you have to replace blood with your sodium chloride and all that. So replacement kind of therapy. So stimulation, drug may act by stimulating particular system. Drug may act by depressing the particular system. Drug may act as an irritation, or drug may act as a replacement therapy, right? Now again, drug may act by its cytotoxic action. So cyto means cell. Cyto मतलब क्या होता है? Cyto मतलब cell. Cyto is the term for a cell. Toxic मतलब toxic to the cells. Cytotoxic action means what? So a drug will has a killing effect on the cell. So साइटोटॉक्सिक, इट हैज अ साइडल इफेक्ट ऑन द सेल। सो साइटोटॉक्सिक सेल को किल कर देगा ड्रग। आप बोलेंगे सर ड्रग तो अपन पर्टिकुलर डिसीज के लिए रहे, साइटोटॉक्सिक क्यों हो रहा है? सपोज दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन मीन्स व्हाट? एनी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं? बहुत सारे टाइप के, जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, रिकेशिया, प्रोटोजोआ, so all these microorganisms, so if they get entry in your body, so what will happen? You are suffering from infection, so you have to kill that cell, microbial cell. So that's why cytotoxic action, right? Now again, suppose you are suffering from cancer, so in that also you have to kill the cancerous cell, so there need a cytotoxic action. So all the antimicrobial, anti-cancer drugs, they are cytotoxic or toxic to the cell. Cell को मार देंगे, they will kill the cells, your cancer cells or your bacterial cells, right? So drug may act by stimulating, drug may act by depressing particular system, it may act as a irritant, it may act as a replacement therapy, it may act as a toxic to the cell, cytotoxic, right? Now again, drug may modify your immunological status of body. Drug may modify immune system. Okay, modification of immune system. Drug may act by modification of immune system. Immune system को modify करता है. So immune system it is modified by glucocorticoids and immunosuppressants. Immunosuppressant कब देते हैं आपको मालूम हो गया? When you have to use immunosuppressant or when immunosuppressant are indicated. Suppose you are suffering from any autoimmune disorders. autoimmune disorders क्या होते हैं? इसमें क्या है कि आपके बॉडी के सेल ही एज ए एंटीजन ट्रीट किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होकर जो पूरा सेल है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इन दैट केस टू सप्रेस द इम्यूनिटी को कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर यूज्ड। Suppose you are suffering from rheumatoid arthritis, so in that is an autoimmune disease and immunosuppressants are used. Okay? Most of the anti-cancer drugs they are also immunosuppressant. That's why these glucocorticoids and immunosuppressants. Suppose आपका आप बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पीते हो, तो मतलब आपने लैंग्वेज में आप बेवड़े हो और आपका लीवर हो गया खराब, तो आपको लीवर का करना है, आप बहुत पैसे वाले हो, आजकल क्या पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत पैसे वाले हो तो आपको क्या करना है कि लीवर को ट्रांसप्लांट करना है, मतलब आपका ओरिजिनल निकल के फेंकना है, दूसरा लगाना है दूसरे का। So in that condition, what happens? Your liver is used to your body. आपका liver आपके बॉडी के लिए नॉर्मल है, बिकॉज आपका जेनेटिक मटेरियल जो लीवर का सेल का जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर दूसरा किसी आदमी का लिवर आपके बॉडी में डाल दिया, so your body will not accept it. So you have to find the correct match, and even still correct match is also there, then also your body will not accept that. So क्या होगा कि जो फॉरेन लीवर है या फिर फॉरेन लीवर, व्हाट इज दैट? लीवर इज नथिंग बट द टिश्यू, लीवर इज नथिंग बट द ऑर्गन मेड अप ऑफ अ टिश्यू, मेड अप ऑफ अ सेल, सेल इज मेड अप ऑफ अ different genetic material. So that organ will be treated as a antigen in your body, and again that antibody will be there will be synthesized, and antigen antibody reaction will be there. Your body will not accept that liver, it will reject. Okay, so to prevent that you have to suppress your immunity. So that's why immunosuppressants are used in the transplant, liver transplant and all. Okay, so transplantation of organ, then immunosuppressants are used in the autoimmune disease. Glucocorticoids they also act by modifying the immune system. So drug may act as a stimulant,
again revise, or it may act as a, it may decrease the function or act as a depression. It may irritate or it exert action by irritation. It may act as a replacement therapy. It may have a cytotoxic action like anti-cancer drugs or antibiotics. Then it may modify the immunological system of your body. Or it may modify the immune system of your body. So glucocorticoids and immunosuppressant. So this is the principal mechanism of action. Now ये तो हो गए ब्रॉड टर्म, ये ऊपर ऊपर से हो गए. ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये ऊपर से तो आपको दिख रहा है कि स्टिमुलेट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ये बट एट अ मॉलिक्यूलर लेवल दैट इज डिफरेंट थिंग. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. ओके, so now drug may act by, now drug may produce this stimulation, depression, irritation, replacement, toxic modification of immune system by interacting with the various protein in your body. So drug may act by through a receptors. Drug may act through a receptors. So receptors, they are nothing but the protein in the body. ये क्या होते हैं receptors? They are nothing but the protein in the body. ये proteins होते हैं to which drug will interact and will produce certain kind of effect. Either it may be stimulation, depression, or change in the physiology. Okay? So through a receptor, or drug may act through a receptor, or drug may act through a enzymes. ड्रग क्या कर सकता है आपके बॉडी में कोई एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा या फिर उसको इनिबिट करेगा या फिर ब्लॉक करेगा. राइट. So drug may act through receptor, through enzymes, then then pumps. So in your body various exchange pumps are there. ये जैसे आपके स्टमक में होता है पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप, दैट इज नोन एज प्रोटॉन पंप. वैसे आपके हार्ट में होता है सोडियम एटीपेज ड्रिवन. ड्रग में act by interacting with the receptor. Drug may change the function of enzyme. It may alter the function of pumps, or it may alter the permeability to the ions. Drug may act via receptor, via enzymes, via pumps, or via ion channels. So we'll see it in upcoming slide. Now drug may act by its physical action. Drug may act by its physical action. For example, ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है, सर्दियों में होता है ना तो आप कोल्ड क्रीम लगाते हो, तो फिजिकल एक्शन कैसा. सो इन द कोल्ड क्रीम यू आर यूजिंग लिपोफिलिक your lipid material. So whatever petroleum jelly is there, so that will form a impermeable layer on your skin, so that आपके स्किन का जो मॉइस्चर है वो बाहर ना जा सके, वो वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. सो दैट इज वन ऑफ फिजिकल एक्शन. फॉर एग्जांपल अनदर, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको टॉयलेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको टॉयलेट नहीं हो रहा है, आपको ड्रग देता है, फिर क्या बोलते हैं हाउस होल्ड रेमेडी क्या है, बोलते हैं सर इसबगुल ले लो, इसबगुल का हस्क. सो व्हाट इसबगुल हस्क विल डू, इसबगुल हस्क विल गो इन योर GIT, it will absorb the moisture. Okay, after the absorption of moisture, so it will form a bulk, and that bulk will stimulate the peristalsis to remove the fecal matter. Right. So it acts by its physical action. और ड्रग में act by its chemical action. जैसे एंटासिड्स होते हैं, तो एंटासिड के काम क्या है, they will neutralize the acid in the stomach, right? So they act chemically, they react chemically with the they react chemically with the already formed acid in the stomach. जो एसिड आपके स्टमक में बना है उसके साथ में रिएक्ट होकर क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे. तो ड्रग में एक्ट बाय केमिकल इंटरेक्शन, ड्रग में एक्ट बाय इट्स फिजिकल एक्शन. राइट. सो इट मे एक्ट थ्रू रिसेप्टर, इट मे एक्ट थ्रू एंजाइम्स, इट मे एक्ट थ्रू pumps, it may act through ion channels, or its physical action or chemical action. Right. So drug may act by altering the metabolic process. Metabolism भी alter कर सकता है. It may increase the metabolism, it may decrease the metabolism. So these are the different mechanism of drug action. तो ड्रग कैसे कैसे एक्ट हो सकते हैं. राइट. we'll see one by one. Again, most of the drugs they act by binding to a receptor. Most of the drug कैसे एक्ट करते हैं, they act by binding to a receptor protein. They act by binding to a receptor proteins or enzymes or ion channels. So this is the main action. Most of the drugs they act by interacting with the receptors or enzymes or ion channels. Right. And may also act on a cell membrane, inside or outside of the cell, to produce a effect. इस सेल का स्पेलिंग यहाँ पे कर लो, CELL. So a drug may act. So drug may act in a different way, but most of the time drug act on a receptor protein, or it act on enzymes, it act on ion channels on the cell membrane, inside and outside, to produce a certain action. ठीक है. ड्रग मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट होगा, या फिर एंजाइम को अल्टर करेगा, या फिर आयन चैनल का परमिटिविटी अल्टर करेगा, वो और एक्शन उसका
मिलेगा आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, राइट. सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. नाउ फ्यू बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. तो कुछ बेसिक मैकेनिज्म से, so we are, I think we already see that. So first one is nothing but the via receptor. So most of the drug act via receptor. So receptor का different type होता है, type 1, type 2, type 3, type 4. We are going to see that receptor full. Okay, पूरा receptor आज अपन देखने वाले. Second one is nothing but the via enzymes and pumps. For example, so drug may act by altering the enzyme section. Drug may act by altering the enzyme action. For example, एक enzyme होता है, ठीक है, एक enzyme कौन सा, xanthine oxidase. There is one enzyme known as xanthine oxidase. What is that function of that enzyme? So this xanthine oxidase is the enzyme which is involved in the metabolism of purines. तो purines pyrimidines होते हैं आपकी बॉडी में, उसका मेटाबॉलिज्म करने वाला कौन है, xanthine oxidase. So it will metabolize the purine and convert them into uric acid. यूरिक एसिड को बनाता है वो. अगर यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा हो गया so you may suffer from gout. ठीक है, gout से सफर हो जाए. So in that condition one drug is used known as allopurinol. ये allopurinol क्या करता है, this allopurinol inhibits the xanthine oxidase enzyme. It is just example to show you that how drug act via enzymes. So allopurinol is an enzyme inhibitor which inhibits the xanthine oxidase and prevent the formation of uric acid, which is a useful in the your gout. ठीक है, तो allopurinol जो ड्रग होता है that is a xanthine oxidase inhibitor और वो gout में यूज करते हैं. gout में क्या होता है, there is a increased level of uric acid and बॉडी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया, क्या होगा, so that uric acid is deposited. यूरिक एसिड के साथ में सोडियम कैल्शियम ये क्या करता है, सॉल्ट बनाता है. तो वो सॉल्ट कहाँ पे डिपोजिट होता है, आपके साइनोवियल जॉइंट्स में, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, पेन, सूजन वगैरह होता है. दैट इज आर्थराइटिस. So to prevent or to decrease the uric acid level, so this allopurinol is used. Allopurinol is a xanthine oxidase inhibitor. So drug may act via enzymes, stimulating the enzyme or inhibiting the enzyme. Okay. Now again, acetazolamide is a, again it is a diuretic. Acetazolamide is a drug which is a diuretic, also used in the intraocular tension, also used as an anti-epileptic also. So it is a inhibitor of one enzyme. ठीक है, जैसे allopurinol xanthine oxidase को इनहिबिट करता है, वैसे acetazolamide ये एंजाइम को इनहिबिट करता है. कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर. सो acetazolamide इज अ कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, राइट. जैसे आपका बाकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होता है, देयर आर लॉट ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक योर कैप्टोप्रिल, इनाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल. सो ऑल दीज आर नोन एज ACE इनहिबिटर. ACE क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. तो ये भी एक एंजाइम है. तो ड्रग एक्ट वाया एंजाइम. सो allopurinol xanthine oxidase को इनहिबिट करता है, acetazolamide कार्बोनिक अनहाइड्रेस को इनहिबिट करता है, ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. ओके, सो ड्रग में एक्ट बाय inhibiting or stimulating the enzymes, right. Now drug may act by stimulating or inhibiting the pumps, various pumps in the body. So for example, so एक पंप होता है आपके स्टमक में. In that your stomach you have one pump known as the proton pump, known as the proton pump. It is known as a sodium hydrogen ATPase driven pump. Sodium hydrogen ATPase driven pump in the stomach. इसका रोल क्या होता है, it will make hydrogen ion available. तो ये एसिडिटी करता है, मतलब एसिड प्रोडक्शन करता है. ओके, so if you are suffering from acidity, so what kind of drug are used, proton pump inhibitors, right. Proton pump inhibitors, so they inhibit this certain, this they proton pump inhibitors like omeprazole, pantoprazole, rabeprazole, dextromethorphan, esomeprazole. They inhibit the this hydrogen potassium ATPase driven pump in the stomach, right. Again there are certain drug which inhibit the cardiac pump. तो आपका कार्डियक टिश्यू कार्डियक मसल में मायोकार्डियम में पंप होता है, known as सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप. सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, तो ये आपके हार्ट के मसल में होता है. सो दैट इज इनहिबिटेड बाय इट इज नोन एज कार्डियक पंप, दैट इज इनहिबिटेड बाय डिगोक्सिन. तो जो डिगोक्सिन होता है तो इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम ATPase driven pump known as a cardiac pump, right. So drug may act via enzymes or they may stimulate the enzyme or they may inhibit the enzyme. तो most of the drugs जो इनहिबिटरी होते हैं वही यूजफुल होते हैं, स्टिमुलेटरी भी यूजफुल होते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस में. नाउ सर्टेन ड्रग्स दे आल्सो अल्टर द फंक्शन ऑफ पम्प्स, राइट. नाउ ड्रग में एक्ट वाया आयन चैनल्स. जो आयन चैनल्स होते हैं बॉडी में, ड्रग में एक्ट वाया आयन चैनल्स. फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स,
and your sodium channel blockers. तो क्या होता है कि आपको जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन पंप होते हैं, प्रोटीन, देयर इज अ चेंज इन द परमेबिलिटी फॉर आयंस. सोडियम अंदर आ जाएगा या फिर क्लोराइड अंदर जाएगा, कौन जाएगा अंदर वो डिसाइड करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं आयन चैनल्स, राइट. सो दे मे एक्ट वाया आयन चैनल्स, they may change the the calcium channel blockers. So what will they do, जो कैल्शियम जो अंदर जाता है सेल के अंदर, entry of calcium will be blocked by these calcium channel blockers like verapamil, diltiazem, and dihydropyrimidines like nifedipine and all that. So all these are used as antihypertensive. Calcium channel blockers, they act via blocking the calcium ion channel. Again sodium channel blockers, so they are also sodium channel blockers. So most of the local anesthetics, लोकल एस्पेक्ट होते हैं जैसे आपका लोकल लिग्नोकेन वगैरह, सो लिग्नोकेन, प्रिलोकेन, अमिडोकेन, so all these are the sodium channel blockers. Even some anti-epileptic drugs are also sodium channel blockers. So drug may act via receptor. So we are going to see that receptor of देखेंगे अपन स्लाइड में. Drug may act via enzymes and pumps. Drug may act via ion channels, right? Or drug may act via by its physical action. We are going to see it. Drug may act by its chemical action. For example, एक KMN number होता है, पोटेशियम परमैंगनेट. So potassium permanganate is nothing but the oxidizing agent. क्या होता है oxidizing agent? So it oxidizes the bacterial enzymes and proteins and it will act as a germicide. ये क्या है, germicide होता है potassium permanganate. Okay, so it act via chemical interaction. Now drug may act by changing the metabolic process. Now first mechanism of action of drug, you can see इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. फॉर एग्जांपल mechanism of action of drug, so type of action, then subtype and examples. ठीक, पहले क्या है कि टाइप ऑफ एक्शन कौन सा है, फिजिकल एक्शन है, केमिकल एक्शन है, या फिर क्या है, मतलब कौन सा है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्शन, देन सब टाइप, उसमें सब टाइप क्या है एंड एग्जांपल्स, राइट. सो ड्रग में एक्ट बाय इट्स फिजिकल एक्शन. सो फर्स्ट वन इज अ फिजिकल एक्शन. ड्रग में एक्ट बाय इट्स फिजिकल एक्शन. फिजिकल एक्शन से कैसे एक्ट होगा, फर्स्ट वन इज, सो ड्रग में एक्ट बाय इट्स फिजिकल एक्शन. फॉर एग्जांपल दिस एक्टिवेटेड चारकोल इन द पॉइजनिंग, एक्टिवेटेड चारकोल इन द पॉइजनिंग. तो जो चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल मतलब जो कोळसा असतो, कोळसा कोयला होता है, तो जब लकड़ी जलने के बाद जो बचता है कोयला, तो उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करके एक्टिवेट करते हैं सो दैट उसका एब्सॉर्प्शन पावर जल्दी ज़्यादा हो जाए. तो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग. सपोज इफ यू इंजेस्टेड समथिंग विच इज अननोन, आपने कुछ पॉइजन ले लिया और वो मालूम ही नहीं कौन सा है, ठीक है, तो उसमें क्या उसका एंटीडोट क्या रहेगा, अगर पॉइजन ही मालूम है तो क्या देंगे. तो इन दैट केस universal antidote is used. What is universal antidote? It consists of a activated charcoal, tannic acid, and then sodium, calcium carbonate. There are three components of your universal antidote. Universal antidote में क्या रहेगा, एक्टिवेटेड चारकोल एक रहेगा, टैनिक एसिड एक रहता है और बाद में कैल्शियम कार्बोनेट एक रहता है, ठीक है. तो एक्टिवेटेड चारकोल का रोल क्या है, तो activated charcoal will go into the stomach, it will absorb the unabsorbed poison from stomach. जो स्टमक में जो पॉइजन है जो आगे अभी तक ब्लड में नहीं गया, उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा. so it will absorb on particles of charcoal. So charcoal, activated charcoal used in the poisoning act by its physical action known as adsorption. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. okay, now again for example bulk laxative and bulk laxative like isabgol husk. Isabgol husk is used in the treatment of constipation. What will it do, it will go in your GIT, it will absorb more water and it will stimulate the peristalsis. So it acts by mass of drug. It is acting via increased bulkness or mass of physical action. में देखो पहला आता है adsorption, second mass of drug, third osmotic property. So for example osmotic diuretics, so they act as a diuretics by their osmotic property. मतलब क्या, इतना याद रखो, osmotic diuretics जिससे होता है like mannitol and all that. Okay? Mannitol, then isosorbide, then sucrose, etc. So what will they do?
जब भी उसका रिमूवल हो जाएगा बॉडी में से वो वाटर को साथ लेके जाए, क्योंकि वाटर का और ऑस्मोटिक डायोड का अफेयर चलता है, तो वो वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते. Osmotic property due to osmolality, they are exerting their action. So it is also a physical action. Again, next one is the radioactivity, radioopacity. So this action most of the time ये drugs नहीं होते, but in the some cases they act as a drug. But most of the time these are nothing but the radio opaque media or radio contrast media. They are used for the diagnosis. जैसे आपके जीआईडी में कोई दिक्कत है तो आपको वहाँ पे बेरियम सल्फेट का meal दिया जाएगा, barium sulfate meal. So it will go in the GID, and when you will take X-ray, so the structure of GID will be shown. So again, radioactive iodine, iodine 131, is used in the treatment of thyroid cancer. Iodine 131. So they act via its radioactivity. So it is a physical action. Drug act by physical action. उसमें आएगा adsorption, mass of drug, osmotic property and radioactivity. Drug may act via its chemical interaction. जैसे होता है आपको पहला क्या है antacids. They will neutralize the acid in the stomach. So antacids will neutralize. Oxidizing agent का example आपने देखा है. KMnO4 is the oxidizing agent which oxidizes your bacterial enzymes and kills the bacteria. So act as a germicidal. Now drug may act by altering the metabolic process. Drug may act by altering the metabolic process. तो metabolic process कौन alter कैसे alter करेगा? For example, okay, this example is a sulfonamides. Sulfonamides are nothing but the antibacterial drug. ये क्या होता है? Antibacterial drug. Infection में use किए जाते हैं antibacterial drug. Right? Now what they do? They act by altering the metabolic process of bacteria. Bacteria का metabolic process कैसे alter करते हैं? So bacteria needs a folic acid. Folic acid is nothing but the water soluble vitamin, vitamin B6. Okay, so folic acid is required for bacterial cell wall or bacterial cell. Okay, so for the different action, so bacteria will not utilize ready-made folic acid. जो pre-formed folic acid होता है वो bacteria utilize नहीं कर सकते. Bacteria खुद का folic acid बनाता है. Bacteria will synthesize its own folic acid and it will utilize it. तो हम humans जो होते हैं वो क्या है कि मौका परस्त होते हैं, वो रेडीमेड फॉलिक एसिड यूज करते हैं. आप बोलेंगे सर कहाँ से मिलता है फॉलिक एसिड? तो फॉलिक एसिड इज फाउंड इन द वेरियस वेजिटेबल्स. ठीक है, जैसे आपका कॉलीफ्लावर वगैरह होता है, स्पिनच होता है. फोलिक एसिड का नाम ही है फोलिक. अपन क्या बोलते हैं? फोलिक मतलब एक पुराना वर्ड है. फोलिक मतलब फोइनम. फोइनम मतलब क्या? लीफ. फोलिक एसिड वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द लीफ ऑफ स्पिनच. जो आपका स्पिनच होता है, पालक का सब्जी होता है, वहां से फॉलिक एसिड आइसोलेट किया. सो दैट इज नोन एज अ फॉलिक एसिड. सो बैक्टीरियल मेटाबॉलिक अल्टरेशन इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म. सो सल्फोनामाइड्स आर फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर. फॉलिक एसिड का सिंथेसिस ब्लॉक कर देंगे सल्फोनामाइड्स, और बैक्टीरिया का फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा. ठीक है, सो बाय अल्टरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ड्रग में एक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर्स. रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं? देखो, आयन चैनल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ड्रग लाइक दिस डायजेपाम and other diazepam will act on a ion channel like GABA gated chloride ion channel and increases the permeability of chloride, and they are seen as depressing. So drug may act on a ion channel receptors. Drug may act on a G protein coupled receptor. Second type होता है receptor का GPCR. For example, जितने भी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते हैं, so alpha blockers, beta blockers, they are they act via GPCR, blocking the GPCR. Then third type का receptor होता है आपका kinase linked. Third kind of receptor is a kinase linked. So insulin act via this kind of receptor. Now fourth type of receptor is nothing but the intracellular receptor, and hormones act on intracellular receptor. So we are going to see the receptor in the detail. Don't worry about that. Okay. So how drug acts via receptor? Receptor के ऊपर जाके interact होके drug कैसे act होता है? So this study was proposed by two scientists. This was proposed by two scientists, Langley and Ehrlich. So they proposed the receptor concept. So Langley and Ehrlich proposed the receptor concept. मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ड्रग एक्ट करते हैं, लेकिन वो कैसे एक्ट करते हैं? They interact with the certain proteins in the body. By interacting with the protein, they alter the physiological state of body. तो ये Langley and Ehrlich उन्होंने प्रपोज किया था. They proposed the receptor concept by referring to a blockage of muscle contraction due to nicotine by curare.
क्यूरारे अल्कोलाइड होता है, क्यूरारे नाम का, राइट। क्यूरारे इज द अल्कोलाइड। उन्होंने क्या किया है, क्यूरारे अल्कोलाइड जो क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ब्लॉक करता है। क्यूरारे अल्कोलाइड ब्लॉक्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन which is caused by nicotine, which is caused by nicotine. Curare will block the muscle contraction caused by nicotine, right? So this was observed by this Langley and Ehrlich, and then they proposed the theory known as a receptor theory, right? Curare blocks the nicotinic contraction of muscle caused by nicotine, but will not block the contraction of muscle caused by electrical stimulation. आपका मसल दो स्टिमुलस से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पहला है निकोटीन। निकोटीन इज नथिंग बट द नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर इन योर, सॉरी, निकोटीन इज अल्कोलाइड बट नेचुरली निकोटीन रिसेप्टर होते हैं आपकी बॉडी में, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। सो एसिटिलकोलिन विल कॉन्ट्रैक्ट द मसल, निकोटीन आल्सो कॉन्ट्रैक्ट द मसल, and that is blocked by curare because nicotine is a agonist to the nicotinic receptor. तो एसिटिलकोलिन जो होता है उसका दो टाइप के रिसेप्टर होता है, एक होता है मस्कनिक रिसेप्टर एंड एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कनिक रिसेप्टर को वो छोड़ो, निकोटिनिक रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, उसको ब्लॉक, उसको स्टिमुलेट करने वाला ड्रग कौन है, निकोटीन। निकोटीन विल स्टिमुलेट द निकोटिनिक रिसेप्टर एंड विल कॉन्ट्रैक्ट द मसल। बट क्यूरारे क्या है, इट इज अल्कोलाइड which blocks the contraction of muscle by blocking this nicotinic receptor, right? So that was observed by this Langley and Ehrlich, and they proposed the receptor theory. Now what do you mean by receptor? Receptor is nothing but the, it is a protein macromolecular complex which has some functional correlate. So मतलब क्या, मैं बोलता हूँ मतलब समझने के लिए बैठा हूँ। So it is a kind of protein present on the cell membrane, okay, which has some functions. कौन सा फंक्शन है, वो टाइप ऑफ रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटीन आर नथिंग बट द मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस which has a some functional correlate and to which agonist or antagonist, or agonist or antagonist छोड़ो, your drug will bind to cause physiological change. What is the receptor? Receptor is nothing but the protein macromolecular complex, okay, to which drug will bind to alter some physiology, to cause some physiological change. That is nothing but the receptor. और simply in your language receptor मतलब क्या है कि ड्रग जिसके साथ में इंटरेक्ट होते हैं, जिसके साथ में कंबाइन होके एक्शन दिखाता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। दैट इज नथिंग बट द रिसेप्टर, राइट। देयर आर सर्टेन टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर। जैसे रिसेप्टर के ऊपर कौन एक्ट होगा, ड्रग। ड्रग को क्या बोलेंगे अपन, ड्रग को बोलेंगे लिगैंड, लिगैंड एल, ओके। सो दैट इज लिगैंड। नाउ व्हाट इज मीन बाय एफिनिटी? एफिनिटी किसको बोलेंगे? तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ लिगैंड बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर। यहाँ पे मान लीजिए रिसेप्टर है, सो कैपेसिटी ऑफ लिगैंड to bind with the receptor is known as a, so capability of binding to a receptor of a ligand or a agonist, जो भी agonist or antagonist or ligand, so whatever you can say, the ability to interact with the receptor is nothing but the affinity. Now what do you mean by efficacy? Okay, so what do you mean by efficacy? So efficacy is nothing but the intrinsic activity, or you can say efficacy or intrinsic activity, ये दोनों टर्म सिमिलर है, efficacy and intrinsic activity. So what is that? Intrinsic activity or efficacy means ability to produce the pharmacological response upon the interaction with the receptor. पहला क्या है, लिगैंड जो है आपका रिसेप्टर के ऊपर कितनी इफिशिएंटली, मतलब कितना स्ट्रांगली उसके साथ इंटरेक्शन होता है, उसको बोलेंगे एफिनिटी। एंड वो इंटरेक्शन होने के बाद में जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा आपको, आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ योर ड्रग और लिगैंड with the receptor, you are going to get certain pharmacological activity, right? So that pharmacological activity is known as efficacy. So affinity means what? So interaction of drug or ligand or agonist antagonist to the receptor, that is known as a affinity, right? Now after the interaction, the extent of change in the physiological status or extent of change in the pharmacology is known as an intrinsic activity or efficacy. So it is nothing but the ability to produce the pharmacological response. Simple language है. Efficacy means ability to produce the pharmacological response upon interaction with the receptor. Now third term is nothing but the ligand. Ligand is what? Ligand is a molecule that binds to a receptor. पहले बोला ये लिखा था मैंने वहाँ पे. Ligand is the molecule which binds to a receptor. Right? Now binding ability of ligand to the receptor is known as a affinity. And after binding, the pharmacological response produced
after binding is known as a intrinsic activity, or there are receptor, lot of receptor like ion channel, G protein coupled receptor, then enzyme link receptor, and then intracellular receptor. There are another two terms, sphere receptors and silent receptor. So I think these terms I will explain you later on, क्योंकि अगर अभी एक्सप्लेन करूंगा तो वो समझ में आएगा. तो स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है कि स्पेयर मतलब क्या है, जब अपन अपन बोलते हैं ना सर स्टेप नहीं लेके चलो गाड़ी में, अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आप क्या करते हो, स्टेप नहीं लेके चलते हो. मतलब इनकेस आपका टायर पंक्चर हो गया तो आप उसको स्पेयर में जो टायर है उसको निकल के बिठा सकते हो. तो स्पेयर रिसेप्टर मीन्स these are the receptor which are present in the body, okay, but they are not active as such, but in presence of irreversible antagonist. जो irreversible antagonist है वो जो normal receptor को block करता है, उसके बाद में भी, so suppose that your cardiac cell has a beta receptor and you are using beta blocker drugs, so all the cardiac beta receptor will be blocked by beta blockers. But still if you use agonist in a high concentration, जैसे नॉरएड्रेनालिन अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज किया तो आपके तो रिसेप्टर पहले ही ब्लॉक हो चुके सब बाय यूजिंग बीटा ब्लॉकर, बट स्टिल आपके कार्डियक सेल में क्या होता है, ये स्पेयर रिसेप्टर होते हैं, स्टेप नहीं देते, दैट इज नोन एज स्पेयर रिसेप्टर. So in presence of reversible antagonist, a high concentration of agonist can still produce a maximal response, and this is because of the presence of sphere receptor. So for example, beta blockers will block 90% of your cardiac beta receptor, but still stimulation of myocardium is possible because of the sphere receptor. Now, next one is silent receptor. ये क्या है, silent ही रहता है, silent आत्मा ये. So these are the receptor which agonist will bind but will not produce any effect. Silent receptor मतलब क्या, useless receptor. आप बोलेंगे इसको क्या है, यूजलेस. इसको एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट बाइंड भी करता है साइलेंट रिसेप्टर को, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब देयर इज नो एक्शन. सो नोन एज साइलेंट रिसेप्टर. so agonist antagonist will interact with this receptor but will not produce the any effect. now आप बोलेंगे सर इफेक्ट नहीं मिलती क्यों रखा है उसको, फेंक दो उसको, नहीं उसका काम है ना, क्या काम है. so they are involved in the tolerance, they are related with the tolerance. जब आपको टॉलरेंस होता है मतलब आपको रेगुलर ड्रग यूज कर रहे हैं आप, इनिशियली क्या होगा, आपको उसको इफेक्ट मिल जाएगा, बट कुछ कुछ टाइम बाद उसका इफेक्ट नहीं मिलने, बिकॉज क्या होगा, टॉलरेंट हो जाएगा. टॉलरेंस जैसे होता है ना, चलो एग्जांपल अगर बोलूंगा तो बाद में बोलूंगा. बिकॉज क्या होता है कि जैसे आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों को एक आदत होती है कि सर दुख रहा है, झंडू बाम लगा दो, झंडू बाम लगाने के बाद सर उसका दुखना बंद हो जाता है. लेकिन वो क्या है, हर दिन लगाते लगाते उसको आदत पड़ जाती है. अभी उसका सर भी नहीं दुख रहा है फिर भी वो जेडोमोन लग रहा है, लेकिन कभी अगर सर दुख रहा है बाद में फिर जेडोमोन लगा तो उसका इफेक्ट नहीं होगा. दैट इज नोन एज दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इज नोन एज टॉलरेंस. मतलब आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा ही नहीं उस ड्रग का, टॉलरेंस बन जाएगा. टॉलरेंट जैसे होता है ना कि इनिशियली जो बेवड़े लोग होते हैं उनको जैसे दोस्त होता है, चलो चल पार्टी को, उसको पिलाते हैं, थोड़ी पिलाई, थोड़ी भी पिलाई तो वो स्वर्ग में जाता है, झूमता है, ठीक है. उसके बाद में अगर 10-12 दिन में और मिले और भी पिला दे उसको, तभी उसको थोड़ी से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, तब जाके उसका झूमता है. बाद में क्या होता है, महीना 1.5 महीने के बाद में फिर से एक बार मिले और उसको पिलाया तो उसको कुछ ही नहीं हो रहा, अभी उसको पूरा पूरा क्वार्टर लग रहा है. दैट इज अ टॉलरेंस. इफ इंक्रीजिंग द डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इट इज नोन एज अ टॉलरेंस. टॉलरेंस मतलब आपको ड्रग का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा है. नाउ थियरीज ऑफ रिसेप्टर, तो रिसेप्टर के थियरीज कितने हैं, तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसके ऊपर. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय एफिकेसी, व्हाट इज मीन बाय एफिनिटी, व्हाट इज मीन बाय स्पेयर रिसेप्टर, व्हाट इज मीन बाय साइलेंट रिसेप्टर, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है. नाउ थियरीज रिलेटेड टू रिसेप्टर, रिसेप्टर का थियरीज कितना है ये आपको किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, आई नो दैट, ये तो मेरा काम है, बाकी क्लासेस में भी नहीं पढ़ाते. सो थियरीज ऑफ रिसेप्टर, हाउ देयर इज इंटरेक्शन ऑफ रिसेप्टर, और आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ रिसेप्टर को रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्शन हो गया आपका ड्रग का, तो आपको इफेक्ट कितना मिलेगा, कौन डिसाइड करता है. सो फॉर दैट theory was proposed, these theories was proposed to study the effect of drug on the receptor. पहला है लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी, पहला है आपका लॉक एंड की थ्योरी. व्हाट दिस थ्योरी इंडिकेट, लॉक एंड थ्योरी की
लॉक एंड की थ्योरी, इसका क्या मतलब होता है? सो एज पर द लॉक एंड की थ्योरी, इंटरेक्शन between your receptor and drug. So interaction between receptor and drug, that depends on the structure. That depends on the structure of enzyme or structure of receptor and structure of drug. तो as per the lock and key model, इनका कहने का ये मतलब है कि रिसेप्टर जो होता है वो लॉक की तरह होता है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप का होता है, और ड्रग जो होता है वो की तरह होता है, मतलब पर्टिकुलर की ही पर्टिकुलर लॉक को ओपन कर सकती है. ठीक आहे, एक प्रकारची चावी, त्याच कुलपाची चावी, त्याच कुलपाला ओपन करू शकते. आपण दुसरी चावी लावली, तुमच्या गाडी चावी, तुमची गाडी चालू होणार, दुसऱ्या गाडी लावून पहा तुम्ही, चालू नाही होणार. ठीक. तो अगर आपकी चावी आपकी गाड़ी ही स्टार्ट करेगी, दूसरी की गाड़ी स्टार्ट नहीं करेगी, वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ पे. रिसेप्टर के रिसेप्टर का स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर शेप होगा, इट विल लुक लाइक अ लॉक and your drug will look like a key. That's why there is no the interaction. Okay, so agonist and receptor has a structure which is like a lock and key, and they will fit into each other. Then only if they fit into each other, then only they will give the action. तो लॉक एंड थ्योरी के हिसाब से ऐसा है क्या कि रिसेप्टर को जैसे लॉक के जैसा है और ड्रग आपका की के जैसा है, और जब की लॉक एंड की एक मिनट में सब एक एक के ये हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, तभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा एज पर द लॉक एंड की थ्योरी. लेकिन है ना, आपण क्या आहे की ह्युमन से मतलब माझं सगळ्या लोकांना माझं पटत नाही, बाकीच्या सगळ्या लोकांचं माझं पटत नाही. त्याचं कारण काय आहे कि ये पण बऱ्याच लोकांना पडलं नाही. लॉक एंड की थ्योरी बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं थी, तो दूसरी थ्योरी लिखी. कौन सी दूसरी थ्योरी? दिस इज द रेट थ्योरी. Okay, second theory is the rate theory. So now the response produced by interaction of receptor and drug depends on the association or dissociation of the drug with the receptor. दूसरे तरीके ने क्या कहा है, तो पहले ग्रुप जो था उन्होंने पहले किसी ने कोई थ्योरी नहीं दी, अभी कोई तो भी आया उसने बोला लॉक एंड की जैसे स्ट्रक्चर होता है रिसेप्टर का एंड ड्रग का, तभी जाके उसका एक्शन मिलता है. तो फिर बाद में दूसरों को जो बाकी सोए थे उनको भी नहीं, उनकी नहीं खुली, बोले नहीं इसने बोला नहीं तो अपन भी बोलेंगे कुछ. उन्होंने क्या किया कि बोले रेट थ्योरी. रेट थ्योरी मतलब क्या कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ रिसेप्टर एंड ड्रग, मतलब ड्रग रिसेप्टर ये दोनों साथ में कितना टाइम आता है या फिर अलग कितना टाइम रहता है, उसके ऊपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिपेंड है. जितना ज्यादा एसोसिएशन होगा उतना ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना कम मिलेगा. एज पर द रेट थ्योरी, so rate theory is nothing but the rate at which receptor agonist has an association or dissociation. Now ये होने के बाद में कुछ लोग को और भी बुरा लगा, वो बोले सर, वो बोले आप ही बहुत शाने हो गए, मैं भी हूँ. बाकी बाकी लोग बोले कि नहीं आपको ही थ्योरी देना आता है, कि मुझे भी देता है, मुझे भी देना है थ्योरी. उसने क्या किया फिर ये थ्योरी देते, कौन सा? ऑक्यूपेशन थ्योरी. एज पर दिस थ्योरी, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ योर ड्रग एंड रिसेप्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड. ठीक है, रिसेप्टर जो है उसका कितना पार्ट ऑक्युपाई किया है, रिसेप्टर का कितना पार्ट ऑक्युपाई किया है ड्रग ने, मान लीजिए इतना पार्ट किया है, मेजर पार्ट किया है, तो ज्यादा एक्शन दिखाएगा. जैसे मान लीजिए रिसेप्टर है और बस इतना ही पार्ट ऑक्युपाई किया है, तो कम एक्शन दिखाएगा. तो लाइक दैट. So as per the lock and key theory, so receptor and drug will have lock and key like structure and they fit in each other. When particular key will go in a particular lock, then only there is a pharmacological action. Now, as per the rate theory, the rate at which drug and receptor association is there or dissociation is there. Association मतलब क्या? Combining. Association मतलब क्या? Combining. Dissociation मतलब क्या? अलग होना. Association मतलब साथ आना, dissociation मतलब अलग होना. ठीक है, तो like that. These are the theories related to receptor. So ये important नहीं ज़्यादा. Receptor regulation. Receptor regulation. Amount of receptor may be altered. मतलब कितने receptor होंगे? The quantity of receptor may be altered many times due to prolonged stimulation or antagonism. अगर कोई ड्रग है जो रिसेप्टर को बहुत टाइम से स्टिमुलेट कर रहा है, रेगुलर यूज ऑफ एगोनिस्ट ड्रग, so what will happen, and regular use of antagonist drug, what will happen? Due to regular use of agonist or antagonist drug, what will happen? There is a change in the density of receptor, or there is change in the amount of receptor, or there is change in the number of receptor. Antagonist regular use करे, agonist regular use करे, उसके कारण क्या होता है? रिसेप्टर जो है जितना रिसेप्टर होता है
उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर रेगुलेशन। कैसे होता है, सो देयर इज अ टू काइंड ऑफ रेगुलेशन। फर्स्ट वन इज अप रेगुलेशन। अप मतलब क्या, ऊपर, ऊपर मतलब क्या है, प्लस, अप रेगुलेशन। सो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटागोनिस्ट, ये आपको किसी पढ़ने नहीं बोला, कोई भी क्लासेस में ये टर्म आएगा नहीं, या भी आपके टीचर ने भी नहीं बोला। व्हाट इज अप रेगुलेशन, सो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटागोनिस्ट और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंटागोनिज्म। इससे होता है जो ब्लॉकर्स वाले ड्रग होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ड्यू टू यूज ऑफ, ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटागोनिस्ट ड्रग or due to antagonism of receptor by antagonist, there is an increased number of receptors and increase the sensitivity of receptor। जब एंटागोनिस्ट रेगुलर यूज कर रहे हो तो आपके बॉडी में रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, उसको बोलते हैं अप रेगुलेशन। एंटागोनिस्ट अगर ज्यादा यूज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपकी बॉडी रिसेप्टर्स जो है, नंबर ऑफ रिसेप्टर उसको बढ़ा देगी, दैट इज नोन एज अप रेगुलेशन। Okay, for example, prolonged use of beta blocker result in the upregulation of beta receptor. Then sudden withdrawal of, okay, sudden withdrawal of this propranolol may cause angina pectoris due to upregulation। एक एग्जांपल है उसका। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूंगा, ठीक। तो इसके लिए ऑलरेडी ये जो पार्ट होता है, सो अपरेगुलेशन मतलब क्या है, जो एंटागोनिस्ट ड्रग है अगर वो कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो रिसेप्टर के ऊपर एंटागोनिज्म करेगा वो, बट ड्यू टू इन रिस्पॉन्स टू दैट बॉडी आपकी क्या करती है और रिसेप्टर बनाती है, तो उसको बोलते हैं अप रेगुलेशन। ठीक है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स अगर किसी पेशेंट को है, एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो अगर सडनली उसको स्टॉप किया तो क्या होता है कि सडनली बीटा ब्लॉकर स्टॉप किया तो मतलब अभी रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला ड्रग आपने दिया ही नहीं, रिसेप्टर तो बहुत सारे हैं, तो जो ब्लॉक करने वाला नहीं दिया उसका मतलब जो एगोनिस्ट है वो आएगा और दे इट विल कॉज angina pectoris due to sudden withdrawal of propranolol, it can cause angina pectoris, that is due to up regulation। और डाउन रेगुलेशन मतलब क्या, ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर, जो एगोनिस्ट वाले ड्रग होते हैं स्टिमुलेंट, प्रोलॉन्ग्ड agonist, prolonged use of agonist, they continuously stimulate the receptor, causes desensitization and causes decrease in the receptor density or receptor number or receptor quantity, this is known as down regulation। So continuous use of beta agonist in case of asthma, that result in the decreased therapeutic response to down regulation of beta 2 receptor। मतलब क्या कि बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है जो आप अस्थमा में यूज करते हैं, कौन सा, सल्बेटामोल, टेराबिटालिन। ओके, वो ड्रग अगर अस्थमा में कंटिन्यूस उसका यूज करेंगे तो क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा ब्रोंकाइटिस में। तो क्या होता है कि ड्यू टू दैट कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर बाय दिस ड्रग, so there is a decreased production of these receptors in your body। ठीक है, okay, and due to decreased production of receptor in the body, there is a decreased response to this drug, that is due to down regulation। तो अप रेगुलेशन में क्या है कि एंटागोनिस्ट ज्यादा यूज करने की वजह से आपके रिसेप्टर का क्वांटिटी बढ़ जाता है बॉडी में से, और डाउन रेगुलेशन में क्या है कि ड्यू टू कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर आपकी बॉडी में रिसेप्टर का अमाउंट कम हो जाता है। तो अप रेगुलेशन मींस इंक्रीज इन द रिसेप्टर, डाउन रेगुलेशन मींस डिक्रीज रिसेप्टर एंड सेंसिटिविटी। तो ये एक्चुअली लास्ट में होना चाहिए रिसेप्टर होने के बाद में पूरा। So what is the receptor? Receptors are nothing but the specific protein molecules in the cell membrane or in the cytosol that regulate the cell function by altering the enzyme activity or by changing the permeability of ions by or conformational feature or by changing the genetic material in the nucleus। Okay, so these are the proteins molecule with, these are the protein macromolecule with functional correlate, they are known as the receptors। What is the definition of receptor? रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर दे आर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन होता है या फिर साइटोसोल में होता है, सेल के अंदर में। एंड ये क्या करता है, दैट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सेल, ये सेल का फंक्शन रेगुलेट करता है, सेल का फंक्शन क्या होगा क्या नहीं ये रेगुलेशन कौन करता है, कंट्रोल करता है, कौन, रिसेप्टर। बाय अल्टरिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कैसे करता है, बाय अल्टरिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, by changing the permeability to ions, by bringing a conformational change, okay, or by changing the genetic material in the nucleus। Such protein molecule with the functional correlate, they are known as a receptor। receptor का ये definition है। now there are different kind of receptors, कितने टाइप के होते हैं देखो, there are 4 type of receptor, नहीं 4 type। so what is the first type, first type of receptor, they are known as a ion channel receptors।
Second type of receptor they are known as G protein coupled receptor. Third type of receptor they are known as a enzyme linked receptor. Fourth type of receptor they are known as a intracellular receptor. I will explain this one by one. First I will save the recording and then we will continue. पर इसको recording को save कर लेता हूँ कि बराबर हो गया होगा.